Hello students, welcome to the class. Today we are here to discuss some interesting questions. And if you are able to see this question which we are going to understand, that's related to the Kirchhoff's law. I hope you all saw the video and the live class which was related to the Kirchhoff law. If you not watched it, first watch that class and then come and solve this question. That's a very interesting question. Let's quickly start it. And students, if you are having any doubts, any queries, you can definitely ask it to me in the comment boxes, right? So let's see what this question is talking about. It's saying that if R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 4 ohm, R3 is 6 ohm, determine the electric current flows in the circuit below. So here we need to determine the value of electric current which is flowing through the circuit. Now, this question, if you see that, is based on Kirchhoff voltage law. We can apply Kirchhoff voltage law. Other methods are also there which we can use. But right now we are trying to apply the Kirchhoff voltage law and we will try to solve that question. So first of all, see that this is a negative terminal. Sorry, just a second. I hope you all remember the टू साइन कन्वेंशन रूल्स जो बिल्कुल ही रिक्वायर होते हैं केवीएल में. मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए थे. रिकॉल कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते. तो बच्चों देखो R1 है यहाँ पे, चलिए वैल्यूज लिख ही लेते हैं. यहाँ पे R1 की वैल्यू है 2 ओम, ठीक है. R2 की वैल्यू है 4 ओम. बच्चों एक बार आप सब ट्राई करिए तब तक कैलकुलेट करने के लिए. R3 है 6 ओम, ठीक है. E2 की वैल्यू भी गिवन है 3 वोल्ट, E1 की वैल्यू भी गिवन है आपकी 9 वोल्ट. A, B, C, D. क्यों नेम दे दिया? नेम देने से जो हम एक क्लोज लूप लेंगे उसको डिफाइन करना इजी हो जाएगा, इस वजह से नेमिंग कर दी, ठीक है. और कोई रीजन नहीं है. सो लेट्स टेक अ क्लोज लूप A, B, C, D, A. ठीक है. आई होप आप सबको याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था जब भी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू सिलेक्ट अ क्लोज लूप, राइट. और मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को? सिग्मा वी प्लस सिग्मा आई आर, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट. ओके, चलिए अब हम मूव करना स्टार्ट करेंगे A to B. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट. लेट्स से द आई करंट इज फ्लोइंग and that will be the direction of current. और हम कहां जा रहे हैं? We are going in a opposite direction. A, B, C, D, A. Opposite direction of current. Remember, अगर opposite direction of current में जा रहे हैं and if any resistance is there, we need to write it with minus IR. So let's start from point A. R2 resistance is first there. So we can write minus I R2. I hope it is clear to you. 9 volt cell. Positive to negative we are going. Remember, positive to negative, we need to show it with a negative sign. Minus 9. Again, R1, opposite direction of current. So let's write minus I R1. Actually, we can directly put the values also, but we are doing it in a detail to avoid any confusion. Minus to positive, so plus 3. And minus IR3. That must be equal to 0. Okay? Let's put out the values here. So first R2, which is 4 ohm. So I can say that it is minus 4I minus 9 minus I R1. R1 is 2 ohm. So minus 2I plus 3 minus I R3. R3 is of 6 ohm. So minus 6I. That must be equal to 0. Right? Clear है यहाँ तक सारी चीजें? Now, minus 4I, minus 2I, minus 6I, 4, 2, 6, 6, 6, 12, minus 12I, 3 minus 9, which gives you minus 6, right? Okay, fine. So, now if you see, I we will get 6 by 12. Basically, minus sign आएगा. You can ignore that because current को यहाँ negative value से नहीं show करना है. It will be 1 by 2. So answer will be 0.5 ampere.
right? The right answer will be 0.5 एम्पियर. करेक्ट है क्या ये आंसर? एक बार चेक करके जल्दी से बताइए, जल्दी से सॉल्यूशन चेक करिए एंड लेट मी नो इज इट करेक्ट और नॉट. ओके, द राइट आंसर इज 0.5 एम्पियर. दोनों सेम थे ऑप्शन, तो कंफ्यूज मत होइएगा. सेम ऑप्शन थे, दो ऑप्शन दो बार मेंशन है. 0.52 0.52 सेम ऑप्शन है. द राइट आंसर इज 0.5 एम्पियर. ठीक है, तो आई होप इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्विकली टेक अ नोट ऑफ इट. Okay, so today in a very small learning video we saw that how to apply Kirchhoff voltage law, and I hope that will help you in a much better way. And what you need to do, you need to solve more and more questions which are related to the Kirchhoff voltage law, Kirchhoff current law, and let me know you are able to solve it or not. So that's all for today. I hope you enjoyed that and be here with us. Definitely we are going to come with some more interesting learning videos. That's all everyone. Bye bye.